So, good morning, all of you, once again. Now, we are continuing our next session. Now, let's start our next session. So, हमने जो पहले पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. So, we are going to start. So, we already discussed about mole, what is mole concept, and now in this session we are going to discuss how to calculate mole. So here is the some formula to calculate mole. The first one formula is moles is equal to given mass divided by molar mass. So mole को we denoted mole by n, small n, and given mass is denoted by m, and molar mass is denoted by capital M. Okay, and there is another formula for calculation of moles. Moles is equal to given number of particle divided by Avogadro number. So mole is denoted by n, and given number of particle is denoted by capital N, and Avogadro number is denoted by n naught. हम इसको n naught बोलेंगे. Okay, मतलब अगर if you want to calculate mole from mass से calculate करना चाहते हो तो we can use this formula. If you want to calculate mole from particle, number of particles अगर calculate करना चाहते हैं, so we use this formula. And there is another formula for the calculation of mole. See this formula, the number of atom. अगर आपको नंबर पता करना है, मोल नहीं पता करना है, मतलब एक मोल में कितने नंबर होते हैं हमको पता है, उसी तरह से हाफ मोल में कितने होंगे, 0.2 मोल में कितने होंगे, वो उसके लिए फार्मूला गिवन मास divided by molar mass, given mass divided molar mass multiplied by Avogadro number. So here is the formula. Number of particle is equal to n, number of particle is equal to n is equal to m by m multiplied by n naught. उसी तरीके से there is another formula from the given volume of a gas, from the given volume of a gas. अगर गैस का वॉल्यूम दिया हो, so you can also calculate from moles. STP, at STP पर हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. at STP, STP means standard temperature and pressure. Standard temperature means 1 bar pressure और 1 atm approximately both are same. 1 bar and 1 atm pressure and 273 Kelvin temperature. मतलब this type इतना अगर प्रेशर है एंड इतना अगर टेम्परेचर है तो वो STP कहलाता है. सो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. दिस इज लीटर. वॉल्यूम को हम लीटर में देखने वाले हैं. सो हियर दिस इज द 3 मेन फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोल्स. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम question how to calculate moles. So see this question, how many moles are present in 88 gram carbon dioxide. 88 gram carbon dioxide में कितने मोल प्रेजेंट होते हैं. So how many moles? So here mass is given, so we use first formula. Solution n is equal to m by m. So mole is equal to given mass divided by molar mass. So here we have given carbon dioxide, so molar mass of carbon dioxide is, first of all calculate the molar mass of carbon dioxide. The molar mass of carbon dioxide is carbon for 12 and oxygen here is 2 times, so 16 plus 16, the answer comes out to be 44 gram. So the molar mass of carbon dioxide is equal to 44 gram. So here put this value in this formula. तो given mass ये जो मास हमको दिया है here small m, so here we put 88 मोलर मास 44 ग्राम, तो यहाँ से इसको रख देंगे. सो जब यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे मोल की वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 2 मोल. सो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल. नाउ लेट्स सी अदर क्वेश्चंस. What will be the mass of 5 mole of sulfur dioxide? Now you have to calculate mass. How will be the mass? You have to calculate mass. 5 mole of sulfur dioxide. 5 mole of sulfur dioxide का mass कितना होगा? So here is our formula. n is equal to small m by m. तो mole is equal to given mass divided by molar mass. We have given mole
and molar mass. So first of all calculate the molar mass of the sulfur dioxide. So molar mass of the sulfur dioxide is, sulfur is 32, here 2 oxygen is given, so 16 plus 16 is equal to 64 ग्राम. तो n is equal to 5 मोल. गिवन मास आपको कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास इज इक्वल टू 64. पुट दिस ऑल द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. सो 5 n इज इक्वल टू 5 मोल आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे. एंड मोलर मास इज